नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के एक और महत्वपूर्ण मिशन जिसका नाम है PSLV-C54 EOS-06 मिशन। मैं विकास स्वर्णकार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ सह कमेंटेटर के रूप में है मिस पी माधुरी। आज 26 नवंबर 2022 को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:56 पर PSLV-C54 का प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जाएगा। इसी अनुसार सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। कुछ अंतिम गतिविधियों तथा जांचों के पश्चात PSLV-C54 का प्रज्वलन 11:56 पर किया जाएगा। इस प्रमोशन की उल्टी गिनती 25.5 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और इस दौरान सभी अंतिम कार्यों को संतोषजनक तरीके से पूर्ण किया जा रहा है और अब हम उड़ान से 24 मिनट की दूरी पर हैं। Namaskar and good morning viewers. You are watching the live telecast of launch of PSLV-C54 EOS-06 mission. I am Madhuri bringing to you the commentary from the Mission Control Center broadcasted by DD National. The live coverage is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. With me is my co-commentator Shri Vikas Swarnkar. Now, before moving on much with the views of the launch, we bring to you a curtain raiser video regarding this mission. ISRO's workhorse PSLV in its flight C54 is ready to launch EOS-06 satellite along with 8 nanosatellites into 2 different SSPOs. The mission is targeted to launch from Satish Dhawan Space Center SHAR on 26 November 2022. EOS-06 is third generation satellite in the OceanSat series, which provides continued services of OceanSat 2 with enhanced payload capability. EOS-06 OceanSat 3 spacecraft is a third generation satellite to study the biological parameters of ocean. This is having advanced payload specification as well as application areas. The satellite is realized on I-1K bus having liftoff mass of 1115 kg. It will put into the orbit height of 732.5 kilometers. It is an operational class spacecraft with complete redundancy, providing 5 years mission life. The satellite on board carries 4 important payloads, namely Ocean Color Monitor OCM3, Sea Surface Temperature Monitor SSTM, KU Band Scatterometer SCAT3, Argos. The OceanSat 2, which was launched during September 2009, configured to cover global oceans and provide continuity of ocean color data with global wind vector and characterization of lower atmosphere and ionosphere. The mission resulted in many research collaborations nationally and internationally on various areas: global chlorophyll distribution, KD490 distribution, ocean color images, oil spillages, wind vector products. The EOS-06 is envisaged to observe ocean color data, sea surface temperature and wind vector data to use in oceanography, climatic and meteorological applications. The satellite also supports value-added products such as potential fishing zone using chlorophyll, SST and wind speed and land-based geophysical parameters. The primary satellite EOS-06 will be separated in orbit 1. Subsequently, orbit change is planned by using 2 orbit change thrusters OCTs introduced in the propulsion bay ring of the PSLV-C54 vehicle. The passenger payloads PPLs will be separated in orbit 2.
India-Bhutan SAT, a collaborative mission between India and Bhutan, is INS-2B satellite for Bhutan with two payloads, namely Nano-MX, a multispectral optical imaging payload developed by Space Applications Center, and APRS Digipeater, which is jointly developed by DITT Bhutan and URSC. The other three payloads are commercial payloads from NSIL. The Anand 3 axis stabilized nanosatellite from Pixel India. Astrocast is a 3U spacecraft with 4 numbers of satellites. An ISI Space Quad Pack Dispenser is from Spaceflight Inc., USA. The Thai Bolt is a 0.5U spacecraft bus that includes a communication payload from Dhruva Space using their own orbital deployer with a minimum lifetime of 1 year. You have just heard from the project director of the primary satellite EOS-06 and the details about the passenger payloads. The launch is scheduled to take place today, the 26th of November 2022 at 11:56 hours Indian Standard Time from the first launch pad at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota, which is located on the eastern coast of India. Minutes. This mission is configured with PSLV-XL carrying EOS-06 weighing 1150 kg and injecting in 742.93 kilometers altitude with 98.34 degrees inclination and 8 other passenger payloads at 511.2 kilometer circular orbit with 97.45 degrees inclination. Launch of PSLV-C54 marks the 5th launch of ISRO in the year 2022. Apart from the workhorse PSLV's 2 flights, the new rocket SSLV undertook its maiden flight and LVM-3 successfully deployed 36 satellites in its first commercial mission. CNC to TTC Director, all strike elements are ready to support PSLV-C54 EOS-06 INS-2B mission. अब हम उड़ान से 18 मिनट की दूरी Minus पर हैं। 18 minutes. तब तक आपको मिशन विवरण दे देते हैं। PSLV-C54 EOS-6 मिशन, इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में EOS-06 नामक 1115 केजी का भूप्रेक्षण उपग्रह है, जिसे लगभग 742 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में 98.34 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाना है। मुख्य उपग्रह के साथ अन्य 8 सहयात्री उपग्रह के रूप में अपनी कक्षा की ओर इस PSLV-C54 में सफर कर रहे हैं। इस मिशन में सर्वप्रथम EOS-06 उपग्रह को 742 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने के पश्चात अन्य 8 उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह ऑर्बिट कक्षांतर ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स की मदद से किया जाएगा। Timing to control, timing confirms external hold mode. Noted. VLCC यह मिशन 1, LCC1 please लगभग note. 7521 सेकेंड का होगा। VLCC noted. Spacecraft directed to mission director, EOS-06 spacecraft is ready for launch. Mission Director Roger. प्रमोशन की उल्टी गिनती 25.5 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और इस दौरान गतिविधियां जैसे यान को पावर ऑन करना, सभी तंत्रों तथा नियंत्रण प्रणाली की स्वास्थ्य जांच करना, तरल नोदक के भराव की स्थिति प्राप्त कर भराव शुरू करना, उपग्रह को पावर ऑन करना, बैटरी आवेशन करना आदि सभी गतिविधियों को संतोषजनक तरीके से पूर्ण किया जा चुका है। TCTC, data loggers are on at SHAR and SHAR2. सभी घटनाएं पूर्ण निर्धारित होती हैं, इसलिए सभी टीम अपना काम सुनियोजित तरीके से पूर्ण करती हैं। Minus 16 minutes. The countdown for PSLV-C54 EOS-06 mission lasted for 25.5 hours Have already given and clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C54 EOS-06 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle
spacecraft, range and ISTRAC network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C54 EOS-06 mission at 11:56 hours IST today, that is 26th of November 2022. Control Roger. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. This is Vehicle Director. Based on authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV-C54 EOS-06 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV-C54 The automatic launch sequence has been initiated. The final capsule of checks for determining the health of rocket are carried out from the ground computers. Onboard computers take over very close to T0. अब दर्शकों के लिए आगे दिखाया जाएगा PSLV-C54 का इंटीग्रेशन वीडियो। That's Director SDSC SHAR Sri A. Rajarajan flagging off the nozzle end segment from the preparation building to the launch pad. Minus 14 minutes. यह प्रथम चरण के नोजल एंड सेगमेंट को प्रथम प्रमोचन मंच पर लाया गया है। क्रेन की मदद से इसे उठाकर मोबाइल सर्विस टावर पर रख दिया जाएगा। Conventionally, positioning of the nozzle end segment on the launch pad marks the beginning of the launch campaign. The S-139 core stage comprises of 5 segments. The case-bonded HTPB propellant cast in the specialized plant in Satish Dhawan Space Center. Each segment weighs about 30 tons. प्रथम चरण PSLV का S-139 जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है। PS2 redundant chain actuation इसमें कुल 5 सेगमेंट्स की मदद से यह मोटर तैयार किया जाता है। प्रथम हमने देखा नोजल एंड सेगमेंट लगाया गया, उसके ऊपर में यह मिडिल सेगमेंट लगाया जा रहा है। यह कार्य पूरी बारीकी, सतर्कता तथा धैर्य के साथ पूर्ण किया जाता है। While the hardware realization by the Indian industry, ISRO keeps a strict control over the quality aspects. Precise engineering goes into the joint design and assembly of segments. As you can see, the crane lowers the segment down at a negligibly slow speed, while the engineers keep intent watch all around. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में यह सारी प्रक्रिया पूर्णतः परिपक्व हो चुकी है तथा यह सभी प्रक्रिया के दौरान अनुभवी क्वालिटी प्रोफेशनल्स की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिससे गुणवत्ता में कोई भी चूक ना हो सके इसका ध्यान रखा जाता है। Extreme care is exercised during the preparation of solid propellant segments, their storage in the magazine, transportation, handling and assembly owing to their hazardous nature. You can now see on your screens the head end segment being hoisted for integration on the middle segment 3. PS3 actuation completed. अब आप देख रहे हैं हेड एंड सेगमेंट को मिडिल सेगमेंट के ऊपर संयोजित कर दिया गया है और यह है इग्नाइटर। प्रथम चरण का इग्नाइटर है, यही वो इग्नाइटर है जिससे पूर्ण मोटर पे का प्रज्वलन होगा। The igniter for the first stage being assembled. It is assembled on the port of the head end segment. You can now see on your screens the arrival of second strap-on to the launch pad. The first strap-on is in the assembled condition.
RCT actuation completed. 12 टन के सॉलिड स्ट्रेपॉन्स जो कि PSLV-C54 में 6 की संख्या में होंगे। दूसरा स्ट्रेपॉन PS2 लाया जा रहा है activation और started. इसे S139 कोर बूस्टर के साथ संयोजित किया जा रहा है। For the PSLV's mission today, 6 strap-ons are there. These are 12 meters long and contain 12.2 tons of propellant each. According to the flight sequence, 4 strap-ons are ground lit and Minus 2 10 minutes. are air lit. यह सभी कार्य मोबाइल सर्विस टावर में किए जा रहे हैं जिसमें प्लेटफॉर्म की सुविधा है और वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक रॉकेट को संयोजन के लिए PS2 prime chain actuation completed. कार्य में लाई All जाएंगी। actuations are completed. That's the tank of SITVC that stores fluid for the secondary injection for the thrust vector control. यान के प्रथम चरण में दिशा निर्धारण के लिए SITVC और RCT का प्रयोग किया जाता है। उसी को अभी आपने देखा संयोजित होते हुए। minus 9 minutes. अब यह इंटर स्टेज आ रहा है। On your screens now is the interstage between the first and second stage. It provides enclosure for the nozzle of second stage and interface for the small retro rockets to slow down the first stage after its separation. जैसा कि हमने बताया, अभी आप देख रहे हैं नोजल PS2 स्टेज का। PS2 तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसके नोजल जंबल टेस्ट किया गया और सभी जांचों के पश्चात इसे भी लॉन्च पैड लाकर पूर्ण संयोजित प्रथम चरण पर संयोजित कर दिया जाएगा। The engine for the PS2 Minus 8 is tested for its gimballing operation, and several other preparatory activities are carried out on the stage before moving it to the launch pad for integration. यह इंजन जो आप देख रहे हैं इसका नाम भी विकास इंजन है। तरल नोदक पर आधारित UDMH तथा NTO4 ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है यह द्वितीय चरण। यह तृतीय चरण है जिसे हम HPS3 के नाम से जानते हैं। यह भी पूर्ण जांच के पश्चात PS4 के साथ संयोजित कर लॉन्च पैड लाया जाएगा। The third and fourth stage are moduled in a dedicated facility in the launch complex and brought to the launch pad. As we have Minus told you, 7 minutes. safety is of paramount importance at all stages of launch vehicle operations. The location of subsystem preparation facilities is a trade-off between the proximity for transportation and safety in case of off-nominal situations. बहुत ही धीमी गति और पूरी सतर्कता के साथ स्टेजेस को लॉन्च पैड लाया जाता है। क्रेन की मदद से इसे द्वितीय चरण के ऊपर में संयोजित किया जाएगा। Vehicle on internal power. पूरे कार्य के दौरान गुणवत्ता तथा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। Minus 6 minutes. The primary satellite for the mission, EOS-06, being prepared and closed in an environment controlled container. This is important to External safeguard power the withdrawn. sensitive electronics and payload components of the satellite.
The container that was closed in the clean room of the preparation building is opened again after the clean room conditions Flight are coefficient ensured loading in the started. launch complex. मुख्य उपग्रह EOS-06 तथा अन्य उपग्रहों को पेलोड अडेप्टर के ऊपर संयोजित कर लॉन्च पैड लाया गया है Flight coefficient loading completed. और इसे यान के सबसे ऊपरी छोर पर समायोजित किया जाएगा। minus 5 Now that the minutes. launch vehicle is fully ready, after the indication of primary satellite and passengers payloads, the heat shield halves are mated. Confirms radar's data. आपने देखा सभी उपग्रह को ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है और अब आप देख रहे हैं MST मोबाइल सर्विस टावर को 700 मीटर पीछे सरका दिया जाता है। पूर्णतः तैयार PSLV-C54 सज्ज है प्रमोशन के लिए। The mobile service tower is retracted from the launch pad and parked a safe distance away. Majestic view of the launch pad and PSLV-C54 EOS-06 mission ready for liftoff. We are 4 minutes away from the liftoff. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। अब यान का पूरा नियंत्रण ऑनबोर्ड कंप्यूटर के पास है। इस दौरान Minus ऑनबोर्ड 4 कंप्यूटर minutes. पूरी गतिविधियों पर आंतरिक परीक्षण अनुक्रम चलाता है और समय आने पर खुद ही प्रज्वलन का कमांड देता है। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर विजिटर्स गैलरी का व्यू आपके सामने। बहुत ज्यादा संख्या पे यहाँ भीड़ उमड़ी है आज PSLV-C54 के प्रमोशन को देखने के लिए। Countdown is in progress Onboard for computer in flight PSLV-C54 and ALS is currently on. During the countdown, critical activities like filling of control system elements, charging of liquid stage gas bottles, servicing propellants into the stages, battery charging and checks for the launch vehicle and satellites are carried out. Minus 3 minutes. अब हम उड़ान से 2 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। Views from the launch view gallery are here at Sriharikota. It has a capacity of 10,000 visitors. 7,000 are currently watching the launch this time. कुछ ही दिन पहले श्रीहरिकोटा पर उत्तर पूर्वी मॉनसून सक्रिय था, लेकिन आज पूरी तरह सामान्य मौसम है, लॉन्च के लिए पूरी तरह अनुकूल। Clear weather, benign winds, and we are merely 2 minutes away from the launch. Minus 2 minutes. ISRO awaiting its 87th overall launch and PSLV awaiting its 24th flight. We are 1.5 minutes away from the launch. भारी संख्या पे विजिटर्स गैलरी पे आप देख सकते हैं, काफी लोग आए हैं आज इस PSLV-C54 के प्रमोशन का आनंद लेने। अब हम प्रमोशन से 1 मिनट की दूरी पर सर्वप्रथम हम Minus देखेंगे 1 minute. RCT का प्रज्वलन, जो कि T-3 सेकेंड्स पर होगा। Minus फिर 50 T0 पर All sharp 4 sound. बूस्टर S139 का Minus प्रज्वलन 50 होगा। All sequencers armed.
minus 45 seconds, minus 40 seconds, PS2 VHPP open. minus 35 seconds, minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, PS2 VSPP open. minus 20 seconds, minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. There's the textbook liftoff of PSLV-C54 EOS-06 mission. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV-C54 बहुत ही रोमांचक क्षण यह होता है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसे लाइव देख रहे हैं, महसूस कर सकते हैं इनकी गर्जना, कंपन। S-130 के साथ बूस्टर शुरू हो चुका है और यह गर्जना करता हुआ आकाश में बहुत ही रोमांचक क्षण। PSLV-C54 EOS-06 मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रवाना हो चुका है। The six strap-on is trusting the burn time of S-130 is 100 seconds. The cumulative thrust being developed at this point in time is 9,008 kilonewtons. Ground lead strap-on completed. There is the confirmation of the ground lead strap-on separation. Next flight event will be the separation of airless strap-ons. को सेपरेट कर दिया गया है। The spaceport and telemetry are getting trajectory information. Stage operated sand engine started. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है सामान्य निष्पादन के बाद और 2 minutes. चरण का प्रज्वलन हो चुका है। Performance normal. First stage having completed its operation has been separated. The second stage PS2 has been ignited against its operation and it's developing nominal thrust. 2.8 meters length and 12.8 meters in length and 0.8 meters in diameter. PS2 stage develops 803 kilonewtons of thrust by thrust combination. So we have information initiated. of flight events in quick succession as the rocket has crossed the atmosphere. Payload fairing has been completed and closed loop guidance initiated. कवच को उपयोग किया जा चुका है। अब अनक्लोज लूप गाइडेंस की अंतर्गत है। निर्धारण सेंसर्स की मदद से करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए The PS2 stage is a pump-fed stage and has Vikas engine which has proved its reliability in every mission. Vikas engine operates on hypergolic combination of UH25 as fuel and N2O4 as oxidizer. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 152 सेकंड्स का होगा। The burn duration of PS2 for the present mission is 152 seconds. द्वितीय चरण के पश्चात यान की कुल ऊंचाई 116 किलोमीटर के करीब तथा वेग 2.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा।
second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण HPS-3 चरण प्रज्वलित हो चुका है। The third stage HPS-3 has commenced its operation. Third stage performance normal. It is a solid propellant stage that has 7.65 tons of HTPB based propellant. HPS-3 develops a maximum vacuum thrust of 239.6 kilonewtons. Plus 5 minutes. यान पूर्णतः पूर्व नियोजित तरीके से अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। For the present mission, HPS-3 stage has a burn duration of 121 seconds. तृतीय चरण HPS-3 फिर से ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें कुल 7.6 टन का प्रणोद होता है तथा यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। SHAR and Trivandrum ground stations are presently tracking. Third stage performance normal. तृतीय चरण करीब 121 सेकंड तक जलकर बंद हो जाएगा और उसके पश्चात करीब 100 सेकंड तक कोस्ट फेज जारी रहेगा। Plus 6 minutes. पूरे तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए We are 6 minutes 15 seconds into the launch. Third stage operation currently in progress. Third stage action completed. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करते हुए अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर चुका है। वर्तमान में सापेक्ष गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 438 किलोमीटर। Now, though we have the confirmation of the completion of Vehicle HPS-3 performance burn, normal. the launch vehicle is in the regime of combined coast, meaning thereby that there is no thrust Plus being 7 developed. minutes. However, the rocket is being controlled through the two clusters of 50 Newton thrusters that are mounted on the outer diameter of the propulsion bearing. These thrusters give propellant from the PS4 stage. The coast phase for present mission lasts for about 105 seconds. कोस्ट फेज जारी है जिसमें पूरा यान पूर्व निर्धारित तरीके से दिशा निर्धारण करते हुए कक्षा की ओर अग्रसर है। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा और उसके पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा। Plus 8 minutes. Third stage separated. तृतीय चरण सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Fourth stage engine started. Now we have the confirmation of the separation of the third stage and the ignition commencement of the fourth stage. Pressure-fed twin engines that burn monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen Fourth as stage oxide performance oxidizer. normal. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन सामान्य। चतुर्थ चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण को 9 minutes. ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें कुल 2.5 टन का ईंधन होता है जो कि दाब भारित इंजन द्वारा 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इसमें ऐसे 2 इंजन्स लगे होते हैं। इस समय सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए
Burn duration of PS4 for this mission is 487 seconds. It has 2.5 tons of propellant loading and develops a maximum vacuum thrust of 7.33 kilonewtons by each engine. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 487 सेकंड के करीब है, यानी कुछ 8 मिनट निर्धारित है। Plus 10 minutes. इस प्रज्वलन काल के अंत तक उपग्रह के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी और PS4 को बंद कर दिया जाएगा। 4 stage performance normal. Meanwhile, let me tell the viewers about the satellites taking ride in this mission. First of all, the primary satellite EOS-06, which is a third generation satellite in the OceanSat series. This is to provide continuity services of OceanSat-2 spacecraft. It has among its payloads Ocean Color Monitor OCM3, Sea Surface Temperature Monitor SSTM, KU band scatterometer SCAT3 and Argos. It has a mission objectives to ensure the data continuity of ocean color and wind vector data to sustain the operational applications. To improve the applications, some additional data sets such as sea surface temperature and more number of bands in the optical region of Florence and in infrared region of atmospheric corrections are accommodated. To develop improved related algorithms and data products to serve in well-established application areas and to enhance the mission utility. चतुर्थ चरण का निष्पादन सामान्य है। यान अपेक्षित पथ को अनुसरण करता हुआ जा रहा है। आइए तब तक इस यान के मुख्य उपग्रह EOS-06 के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। EOS-06 ओशनसैट श्रेणी का तृतीय पीढ़ी का उपग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य OceanSat-2 की जारी सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्नत पेलोड की मदद से वृहद अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना है। EOS-06 में मुख्य नेतभार के रूप में ओशन कलर मॉनिटर, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर, KU बैंड स्कैटरोमीटर और अर्गोस का प्रयोग किया जा रहा है। अनुप्रयोगों में सुधार के लिए EOS-06 अतिरिक्त डेटा सेट प्रदान करेगा, जैसे समुद्री सतह तापमान, पुष्पन के लिए ऑप्टिकल क्षेत्र में और वातावरण के लिए इंफ्रारेड क्षेत्र में ज्यादा संख्या में बैंड्स उपलब्ध कराएंगे। इससे संबंधित एल्गोरिथम्स को डेटा सेट्स की मदद से उन्नत अनुप्रयोग क्षेत्र में विकास लाएगा और मिशन की उपयोगिता में वृद्धि होगी। Plus 13 minutes. Among the passenger payloads, there is 2 numbers of Thibault satellites. It is a 0.5U spacecraft bus that includes a communication payload to enable rapid technology demonstration and constellation development for multiple users. It also demonstrates store and forward functionality for authorized users in the amateur frequency band. The satellite shall be deployed by using Dhruva Space Orbital Deployer Stage to performance perform normal. the specific mission operations for a minimum lifetime of 1 year. चतुर्थ चरण सामान्य प्रदर्शन करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अब हम उड़ान से 835 सेकंड्स की दूरी पर आ चुके हैं। Plus 14 minutes. वर्तमान में त्रिवेंद्रम स्थित ट्रैकिंग सेंटर हमें ये डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। PSLV भारत के प्रमोचक रॉकेट की श्रेणी में तृतीय पीढ़ी का रॉकेट है।
अक्टूबर 1994 में पीएसएलवी की प्रथम सफल उड़ान के बाद पीएसएलवी एक विश्वसनीय तथा बहुमुखी उपग्रह प्रमोचक रॉकेट के रूप में उभरा है। अब तक पीएसएलवी की 55 उड़ानें हो चुकी हैं और वर्तमान प्रमोचन 56वां है। पीएसएलवी विभिन्न उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम तो है ही, इसके लिए वह मल्टी पेलोड एडेप्टर का प्रयोग करता है। न सिर्फ विभिन्न नेतभार बल्कि विभिन्न कक्षाओं पर भी उपग्रहों को स्थापित करने में पीएसएलवी सक्षम है। इस प्रमोचन मिशन में भी ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स के प्रयोग कर ऑर्बिट 1 जो कि 740 किलोमीटर का ऊपरी ऑर्बिट है से ऑर्बिट 2 में प्रवेश कर सहयात्री उपग्रहों को अंतःक्षेपित किया जाएगा। We are 15 minutes, 15 seconds past the launch time. Current altitude is 739 kilometers and the relative velocity of 7.2 kilometers per second. इस समय PS4 प्रज्वलित है और सामान्य निष्पादन कर रहा है। इस दौरान वह कुल 15.2 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ईंधन के रूप में मोनोमेथाइल हाइड्रोजीन तथा ऑक्सीकारक मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज किया जा रहा है। Close to 480 seconds of burn time of PS4 results in the rocket attaining 742 kilometers altitude. Stage thrust cutoff. चतुर्थ चरण को कट ऑफ कर दिया गया है। इसका प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है। अब कुछ ही क्षणों में कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर मुख्य उपग्रह EOS-06 का अंतःक्षेपण किया जाएगा। When the correct attitude also is attained, the primary satellite EOS-06 will be injected. EOS-06 को 742 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में 98.34 डिग्री के झुकाव के साथ 7.57 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति से अंतःक्षेपित किया जाएगा। EOS-06 satellite separated. EOS-06 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। We have had a successful launch and injection of primary satellite EOS-06. This range operation director. Mission is continuing with two phases of orbit changing thruster, that is OCT firing. The first phase of OCT burns takes place in the non-visibility period. The second phase of OCT burns takes place partially in the visibility period of Lucknow in orbit 2. After these two phases of OCT burning, remaining 8 satellites will be separated in the visibility period. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions. Others shall reassemble at 13:30 hours IST. Handing over to Mission Director. Up next is the address by Secretary to EOS, Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. ये बहुत ही इसका पल है। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the PSLV-C54 EOS-04
EOS-06 mission in its first phase of the mission, injecting the EOS-06 satellite at its intended orbit very precisely. And we also observed that the performance of the rocket in this mission in all its stages and functions were exceedingly good. And congratulations to the entire team, PSLV, for making yet another successful mission in the series of its long years of journey. And also congratulations to EOS-06 satellite, which is just deployed its solar panels very correctly at the expected time. And I'm very sure it will continue its further phases of actions. Now, as already announced, this mission is still not completed. We are waiting for the change of orbit of the upper stage along with the remaining 8 satellites. We have the India Bhutan satellite on board and the Anand satellite from Pixel is there. Thai Bolt 1 and 2 are there. And also we have Astrocast 4 satellites on board of PS4 stage currently. So it will go around the Earth. Now the upper stage has small engines. These engines will fire to bring the orbit from the current altitude to a lower altitude of 511 kilometers circular. That again will be a sun-synchronous polar orbit. And this happens through firing at 2 diametrically opposite locations in reducing the velocity of the stage to achieve this lower orbit. And this process happens some part in the visibility of our ground stations and some part not in the visibility. We will have the data, and the satellite after reaching this orbit will be injected into the expected orbit of 511 kilometers circular. So to look for that event, we have our team continuing the work in the ground control center and observing the satellite. So we will come back with this transmission at 1:45 p.m. today to look at the separation process. Meantime, let me invite the mission director to have his observation on the mission and to talk to you, Mr. Biju. Good afternoon to all. As our beloved chairman has briefed here, we have achieved the first part of the mission, PSLV-C54 EOS-06. EOS-06 satellite has been injected into its precise orbit as precisely as possible, and PSLV never fails to deliver. It is because of the excellent team effort put in by all team members here, that is Team ISRO. Team ISRO always delivers. That is again proven here. We are really impatient to complete the second leg of the mission. We will be coming back here soon. I want to express my sincere gratitude to Team ISRO for having achieved this mission. Team ISRO encompasses all our team members, our project team, our SDS, our SR teams, our industries, our review forums, everyone. So thanks to Team ISRO, and my big salute to Team ISRO. Let us wait impatiently, but definitely success is going to be ours at 1:30 p.m. Thank you very much. Thanks to all. I would like to invite mission director, spacecraft director, to speak a few words. Yeah. Respected Chairman, URSC Director and other Center Directors, our ISRO colleagues, very good afternoon to all of you. My heartiest congratulations to PSLV team for successful launch of EOS-06 satellite and putting into desired orbit. Solar panel is deployed and our health of the satellite is normal and it started generating the desired power. EOS-06 satellite is an advanced third generation satellite to study the biological parameter of the oceans. Its application is it's used to identify the potential fishing zones, weather forecasting and this one wind velocity and cyclone detection, cyclone tracking and this maritime security and locating the bioships, and it has a lot of applications. Actually this satellite is asset to nation and it is going to serve the country to full its capacity.
And the major achievements in the satellite is we have used indigenous detector and indigenous optics, and SSTM payload is very new. And I am very confident that the satellite will deliver the very good product and it will meet the user community, whatever the requirement. And from second day onwards, we are going to start the payload operations, and our ground stations is Antarctica and NRC is ready to receive the data and give it to user community. I am very much thankful to Chairman ISRO for his full guidance and every time so many advices he gives for throughout the realization of the full project. Thank you, sir. And I thankful to my URAC director so for his review, continuous help and full realization, and SAC director for his excellent payload, and other directors also. Actually, this satellite has got deliverable from all other centers. So I thank all center directors and all centers, my colleagues, and my excellent OSNSAT team, dedicated and innovative ideas they give. So I thankful to everybody, my review team, for making this mission possible. Thank you, sir. This satellite EOS-06 is built by ISRO for the use by departments and ministries of Government of India. And I would like to take this opportunity to thank all of them for the commitment to make use of the satellite for the missions and projects of each of those ministries and departments. Thank you once again, and we will come back in the second phase of the mission for the successful deployment of the remaining 8 satellites. Thank you.